Good morning, class. Today we are going to discuss the next topic, that is MNC. MNC means multinational companies or global enterprises. So you may have heard about the MNCs. So what is the meaning of MNC? So first of all, I would tell you how these words form. So multinational consists of two different words, that is multi and national. Multi means many and national means countries or nation. So multinational means a company which operate in many countries. Clear? Or in other word, we can say the company which is operated in more than one nation is called multinational company. Such a company has branches, factories and workshop in different countries. A multinational corporation is also known as transnational corporation, global enterprise or international enterprise. The headquarters of multinational companies are located in one country, that is home country, and it carries business in other countries. The MNC gets incorporated in home country. For example, Coca-Cola, Hyundai, Reebok, Sony, LG, Samsung, etc. These all are the example of multinational company. So in simple, you will have to remember that a company which is operating in more than one country is known as multinational company. Clear beta? Now there are some characteristics of multinational company. So first characteristics is giant size and use capital resources. Giant means large, big, very large. The asset and sale of MNC are quite large. These companies operate on large scale. Their operation are so huge that sometimes their sales turnover exceed the gross national product GNP of developing countries. For example, the physical asset of IBM International Business Machine exceed $8 billion. क्लियर? इनका जो साइज होता है, इनका जो ऑपरेशन का स्केल रहता है, ये लार्ज स्केल होता है. एंड मैनी टाइम्स ये इनका जो टर्नओवर होता है, सेल्स जो होती है इनकी, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है. ठीक है, एग्जांपल दिया है IBM इज़ अ कंपनी, फुल फॉर्म इज़ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. इसका जो टर्नओवर है बेटा वो है $8 बिलियन. क्लियर? इट इज सच अ बिग कंपनी. इसका जो फिजिकल एसेट है, सॉरी टर्नओवर नहीं, फिजिकल एसेट जो है वो क्या दिया हुआ है, 8 बिलियन, मोर देन $8 बिलियन. इट इज अ ह्यूज अमाउंट. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. ठीक है, इसका जो कंट्रोलिंग रहेगा, कंट्रोलिंग होता है आपका सेंट्रलाइज्ड, बिकॉज वी हैव जस्ट रेड दैट द हेडक्वार्टर ऑफ द कंपनी विल बी लोकेटेड इन होम कंट्री. Clear? So controlling is centralized. The branches of MNC spread in different countries are controlled and managed from the headquarters located in home country. All the branches operate within the policy framework formed by headquarters, and whatever policy headquarters is framing in all countries, the same policies will be followed. जो भी हेडक्वार्टर ने पॉलिसी बना दी, वो पॉलिसी इसकी सारी ब्रांचेस को फॉलो करना पड़ेगी. इट इज़ अ रूल. सो कंट्रोल इज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. थर्ड characteristics, advanced technology. So MNC make use of latest technology to supply world class product. They employ capital intensive technique
and innovative techniques of production. Clear? जितने भी MNCs हैं, all the MNCs are using advanced technology. Why it is using advanced technology? Because it want to increase its production, and if you want to increase your production, then definitely you will have to go towards the advanced technology. Through traditional method of production, you cannot increase your volume of production. I told you earlier also that there are two types of production method, that is capital intensive and second one is labor intensive. लेबर इंटेंसिव में हम फोकस करते हैं किस पे? लेबर पे, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर से मैनुअल वर्क करवाते हैं, जबकि कैपिटल इंटेंसिव में हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं मशीनरी पे. एंड यू नो व्हेन मशीनरी आर डूइंग वर्क, देन व्हाट विल हैपन? इट विल वर्क more better, more good than manual work. ठीक है, जो लेबर वर्क कर रहा है हाथ से, मैनुअल वर्क कर रहा है, उससे उसके कंपैरिजन में जो मशीन के थ्रू वर्क होता है वो ज़्यादा बेटर होता है और तेज़ी से होता है. एंड व्हेन योर वर्क इज हैपनिंग फास्ट, then what will happen? Your production will also increase. Clear? और ये किसके थ्रू पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू एडवांस्ड टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट वन इज एक्सपांशन ऑफ मार्केट टेरिटरी. ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज एंड एक्सीलेंट मार्केटिंग स्किल, a multinational corporation has access to international market. It is able to sell its product in different countries. MNC operate in more than one country. It has its branches, factories, offices in several countries. It operates through a network of branches and subsidiaries in host countries. Clear beta? We know that which company is called MNC? Who is working in more than one country. So when the company is working in different countries, what will happen? Its market territory means area, its market area will expand, and when the market area is expanding, then there are lot of benefit which company can get. Clear? Is there any doubt? I don't think there should be any doubt. Next one is oligopolistic power. Oligopoly means power in the hand of few companies only. Due to their giant size, the MNC occupy a dominating position in the market. They also take over firms to acquire huge power. For example, HUL, Hindustan Unilever acquired Tata Oil Mill, Ponds India, etc. to improve its market share. Clear? Here we are talking about one type of market, that is oligopoly. We will discuss it later on, what is the meaning of oligopoly in detail. Right now you remember this thing, that oligopoly means power in the hand of few companies only, means in market there are very few companies, and when there are few companies, it capture the large capital in the market or large area in the market. And if some competitors are there, then what will happen? It will acquire means, or it will take over the small companies to increase its area. ठीक है, अपने एरिया को एक्सपांड करने, मार्केट शेयर को एक्सपांड करने के लिए कंपनी छोटी कंपनियों को, MNC छोटी कंपनीज को टेक ओवर कर लेती है, उनको अक्वायर कर लेती है, और फिर वो उसमें मिक्स होकर अपना वर्क कंप्लीट करती है और अपना प्रोडक्ट सेल करती है. आफ्टर दैट प्रोडक्ट इनोवेशन. दीज एंटरप्राइजेज हैव हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च and development department engaged in task of developing new product
and superior design of existing product. We know what is the meaning of innovation. Innovation means new invention. So when the company is large, it invests a lump sum amount in research and development work and design different type of product. Clear? So product innovation is also a part of MNC. After that, marketing strategies. They spend huge amount on marketing. They use aggressive marketing strategies in order to increase their sales in short period. Their advertising and sales promotion technique are normally very effective. Clear? And it use aggressive strategy, marketing strategies. ठीक है, आपने देखा होगा जितनी भी एमएनसीज है इनके ऐड जो रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट, वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। और जब आप एक ही चीज़ को बार बार देखते हो देन वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को स्ट्राइक करती है, और जब आप के माइंड में कोई चीज़ स्ट्राइक करती है तो आप उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हो, आप उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए रेडी होते हो। ठीक है, तो इनका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रहती है वो बहुत अग्रेसिव होती है, एक्सपेंसेस भी बहुत करती हैं सेल्स प्रमोशन पे, और सेल्स प्रमोशन पे जब ज़्यादा एक्सपेंसेस होता है तो उतनी ही ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो उतनी ही ज़्यादा सेलिंग होती है। ठीक है बेटा, सो दीज वर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। आई होप इट विल बी clear to you. Okay, thank you so much.